Good morning, class 11th commerce students. The last topic of the lesson, theory of demand. In theory of demand, I already told you moment of demand and shift of demand. Moment and shift. Moment of demand take place due to price of that product only, the product which are we using, and shift in demand take place due to other factors. Those factors can be anybody, anyone, any factors. So today such kind of questions are also asked in board exam. What happens if price of complementary goods increases? Complementary goods, as I told earlier also, like car and petrol, two goods together fulfill our demands are known as complementary goods. So what happens if price of complementary goods increases? So suppose price of petrol increases. Here we are assuming price of petrol increases. So what is your theory? What do you feel in your mind? If price of petrol increases, how the demand of car is going to affect? Here change take place in petrol. So you will draw the diagram of demand. So if price of petrol increases, then what will happen? Then demand of car will reduce. I think you are agree. अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो कॉमन सेंस ये कहती है कि कार की डिमांड पर फर्क पड़ेगा, और अगर कार की प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड किसकी फर्क पड़ेगा? पेट्रोल की। आपको जो डायग्राम बनाना है वो दूसरा डायग्राम बनाना है। हियर डिमांड प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, so you will draw the diagram of car. So here we will write quantity demand of car and price of car. जब पेट्रोल की प्राइसों में फर्क पड़ रहा है तो आप जो डिमांड कर्व बनाएंगे वो दूसरी प्रोडक्ट का बनाएंगे। तो here I told you the demand of car will reduce. So you tell me this question is belong to moment or shift? ये क्वेश्चन किससे बिलोंग करता दिखाई दे रहा है आपको? ये मोमेंट का क्वेश्चन है या शिफ्ट का क्वेश्चन है? इफ यू सी इट केयरफुली, इट इज द क्वेश्चन ऑफ शिफ्ट, बिकॉज प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स अदर फैक्टर्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. तो व्हाट विल हैपन माय डियर? दिस इज आवर ओरिजिनल डिमांड कर्व OP. When price is OP, demand is OQ. This is our demand curve DD. This is the case of shift. Now our demand is reducing. So whenever demand will reduce, my dear, what will happen? We will shift towards left side. D1, 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 D1. Our demand of car will reduce. Earlier demand was OQ. Now it will be OQ1. I think you understood. आपको समझ में आ गया होगा. हमारी पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड कम होगी. मैंने अभी बताया था पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है तो हम डिमांड कर्व दूसरी प्रोडक्ट का बनाएंगे, एंड व्हेन पेट्रोल प्राइस आर इंक्रीजिंग देन डिमांड ऑफ कार विल रिड्यूस. तो वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड फ्रॉम DD टू D1, D1. तो दिस इज सिचुएशन ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और इट इज आल्सो नोन एज डिक्रीज in demand. It is also known as decrease in demand. And reverse will be the case. If I say over here, what happens if price of complementary goods decreases? Instead of increase, if I take decrease, then it will happen reverse. ये reverse हो जाएगा, क्योंकि अगर पेट्रोल की प्राइस घट जाएंगी तो लोगों के लिए कार खरीदना आसान हो जाता है, क्योंकि डेली कंजम्पशन में पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम होता है. तो when due to decrease in price of petrol, demand of car will increase, so your demand curve will shift towards right side. In this way it will be shifted here. Demand of car, and here price of car. This is your original DD. This is OP price, this is OQ demand. Now demand is increasing, so you will be shifting towards right side. D1, D1. You will be shifting towards right side. D1, D1. So this is known as rightward shift. So this is a question of complementary goods
how it affects our demand curve. Now in the same way I am going to take substitute goods. I am going to describe you now substitute goods. What happens if price of substitute goods increases? Let us take here Coke and Pepsi. Coke and Pepsi, and let us assume that price of Pepsi has increased. So you tell me, my dear, what will happen if price of Pepsi will increase? How it is going to affect the demand of Coke? ये demand को Coke की demand को कैसे affect करेगा? I think you all agree with me. Demand of Coke will increase. Demand of Coke will increase. क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, दोनों का लगभग टेस्ट सेम होता है, तो लोग पेप्सी को छोड़ देंगे, कोक को ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ प्राइस किसकी बढ़ी है? पेप्सी की। जब प्राइस पेप्सी की बढ़ी है तो यहाँ एज्यूम किया जाएगा कोक की प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस ऑफ कोक इज एज इट इज, तो हियर डिमांड ऑफ कोक विल इंक्रीज। Whose price is going to change? Pepsi. So we are going to prepare the demand curve of Coke, and demand is increasing here. Here we will take demand of Coke. Here we will take price of Coke. This is your original demand curve, sir. In such situation, first we will draw our original demand. This is our original demand. Draw with proper scale and pencil here. Now your demand is increasing. So when demand increase, it means we will shift towards right side. D1, D1. Always remember, whatever change is coming, those changes are shown with the help of dotted line. हमेशा changes को dotted line से दिखाया जाता है. तो this is case of rightward shift. This is case of rightward shift. It is also known as increase in demand. So this was the last topic of this chapter, how the demand is going to affect due to change in factors other than price. यहाँ अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है तो उसकी नॉर्मल गुड्स की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, तो इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो हमारा शिफ्ट कौन सा हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. If somebody asks you what happens if income increases and how it is going to affect the demand of inferior goods. Demand of inferior goods. इनकम बढ़ जाती है तो inferior goods की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? तो what is your answer here? If income increases, demand for inferior goods will increase or decrease? I think you all agree with me. Demand for inferior goods will decrease. So it means we will shift towards left side. हम किधर शिफ्ट हो जाएंगे? लेफ्टवर्ड साइड शिफ्ट हो जाएंगे. So this was your last topic. Now with this we are today able to revise entire the chapter of theory of demand. Thank you very much. We will go for another chapter now.